students. I am Dr. Priti Ameta, SGG Government College, Baswara. In this video, I will tell you about the walsh diagram of triatomic molecule at the MSc level. Now, this is the first slide. Walsh diagram given by the A.D. Walsh. This is the British chemist in 1953. What is the use of this diagram? Correlation diagram suggests the shape of triatomic molecule. What are triatomic molecule? AB2, tetraatomic molecule AB3, and pentaatomic molecule AB4 molecule through correlating their shapes with their electronic structure. Walsh diagram help in the correlating the changes in energies of molecular orbital with the molecular geometry. So these are the 4 or 5 things we have to collect about any type of molecule and then form the Walsh diagram. What are the things? First, hybridization, how many electrons in the electronic structure. Third is what is the shape, what are the energies, how molecular orbital are formed, and lastly Walsh tell about that type of diagrams, what is the molecular geometry which is the most stable. Now, what is correlating diagram? Means, suppose we have an example of AB2. AB2 is a triatomic molecule. Central atom's hybridization is sp. Structure geometry is linear, no lone pair. And if band structure, the lone pair is present. Now, geometry is only of bond pair. BAB, this is the linear. This is the regular geometry. And the shape is different when the lone pair is present in the molecule of same hybridization. Here shape is bent shape, one lone pair present and 2B are at the bent position. So we can say this is the sp hybridization. Geometry of these two molecules is sp, but the shape of these two molecules is linear and bent. And geometry of both the molecule is linear, but the shape is bent. Okay. Geometry is given by the valence bond theory. Regular geometry, if the hybridization is sp, the geometry is linear. sp2 triangular, sp3 tetrahedral, but the shapes are given by the valence shell electron pair repulsion theory. According to the lone pair, the shape of the molecule changes in the same hybridization. Okay. Now, next we can take the example of sp3 hybridization. Methane, ammonia and water, all of them of sp3 hybridization. Geometry is tetrahedral, but the shapes are different. Methane have tetrahedral structure because there is no lone pair. Ammonia have pyramidal structure, one lone pair. Water has bent or V-shaped structure. It has 2 lone pairs. So as the addition of lone pair, the shape will be change of molecules in a particular hybridization, in a fixed hybridization. Okay. Now, what Walsh diagram? How Walsh diagram formed? Correlate mutually all the structures, shapes of the particular hybridization. सभी शेप को कोरिलेट किया है इसमें. AB2 linear and bent. Correlate mutually all the possible shapes. Tell finally what is the shape of molecule. If number of molecule in outermost shell of central atom are 2, 3, etc. So we first find out the number of molecule present at the outer shell of the central atom. Then we correlate each and every property of that particular molecule. I will tell you in next slide. Now this is a triatomic molecule AB2 type. Now the geometry is shape are of 2 types. Geometry is linear, BAB and ABB. First is linear, second is bent. Identify the atomic orbitals of attached atom P, combine them and found group orbital. What we are doing first, identify the atomic orbital of attached atom means B. What are the B atomic orbitals outermost participate in the bonding?
then combined them and found group orbitals. Both of the B orbitals, outer atomic orbitals of both the B atoms combine and form group orbitals. Identify the atomic orbital of central atom. Then we identify the atomic orbital of the central atom. Correlate group atomic orbital of B to central atom atomic orbital A. Form molecular orbital representation table. Okay, what we are doing in the Walsh diagram? First, identify the outer atomic orbital of B, combine them, form group orbitals, then identify the atomic orbital of A, then correlate the energy of atomic orbital of A and atomic orbital of B, group atomic orbital of B, and then form the molecular orbital representation. Same process follow for bent structure. Group atomic orbital, correlate them and then form the molecular orbitals. And what is the last step? Correlate the energy of molecular orbital of linear and bent, then study which is of low energy. That structure will be the stable according to the character table. Now, how to draw Walsh diagram? First, we collect all the shapes of one type of hybridization. Example, triatomic have two shapes, linear and bent. Second, determine of point group of a molecule. This point group means this is the topic of symmetry in group theory. So I will tell you directly what are the point groups of triatomic and what are the point groups of pentaatomic in the next video. Now, coordinates assignment to the molecule. Principal axis Z for non-linear molecule. Which coordinate is the principal axis? Z, PZ for the non-linear molecules. Search for atomic orbital of central atom with the same symmetry. Then combination of atomic orbitals with the group orbitals of same symmetry and drawn the molecular orbital of their limiting structures. सेंट्रल एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे, ग्रुप ऑर्बिटल्स लेंगे आउटर के सब्सटीट्यूटेड जो एटम्स हैं उनके, देन उनकी सेम सिमेट्री के होने चाहिए, देन उनका मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे जो उतने भी उसके लिमिटिंग स्ट्रक्चर है उन सब का. नाउ वॉल्श डायग्राम कोरिलेट द एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल टू लिमिटिंग स्ट्रक्चर. जितने भी लिमिटिंग स्ट्रक्चर हैं उनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल की जो एनर्जीज़ है उनको कोरिलेट किया जाता है वॉल्श डायग्राम में. नाउ टेक एन एग्जांपल AB2 टाइप. व्हाट आर द लिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू? लीनियर एंड बैंड. फर्स्ट इज AB2, सेकंड इज अगेन AB2. लीनियर इज atomic orbital BAB. Then the atomic orbital of both the B, they combine, they form group atomic orbitals. Here again in band structure, ABB, both the atomic orbital of B, they both combine and form group atomic orbital. Then second we take atomic orbital of central atom. In band also atomic orbital of central atom. We do complete exercise with both the shapes. Okay. Combine, form molecular orbital. Now group atomic orbital and atomic orbital of central atom, they both combine and form molecular orbital. Same here in the bent. Molecular orbital forms by the group atomic orbital of BB and atomic orbital of central atom. Molecular orbitals are formed, they are of three types: bonding, non-bonding, anti-bonding. Again in the same in the bent, bonding molecular orbital, non-bonding orbital and anti-bonding molecular orbitals. So we found here, we got the molecular orbitals of three types of molecular orbitals of both the types of shapes. Correlation of these molecular orbital energies, this is given by the Walsh. Now what
Up to here, we can study in the molecular orbital theory. Now, what Walsh will do? Walsh correlate the energies of bonding molecular orbital of linear and the bonding molecular orbital of the bent shape. Non-bonding molecular orbital of and non-bonding molecular orbital of bent, anti-bonding molecular orbital of linear, anti-bonding molecular orbital of band shape. These energies are given in a special type of diagram called correlation diagram of molecular energies of different type of molecular orbitals. The correlation diagram of these molecular orbital energy, this is given by the Walsh. This is the character table given by him. That a complete correlation diagram where the energies are correlated, that is called the character table of Walsh. Then fill the electron in both the structure, lower to higher energy, from BMO to NBMO to ABMO. Then according to HOMO, the limiting structure selected. HOMO means highest occupied molecular orbital. Then limiting structure is selected. Inner orbital is energy is not changed much by the bond angle bending. Now we can't consider the inner orbital. Only we can consider here in the outermost electronic orbital. Okay. Now formation of character table. How we form the character table of the triatomic molecule. Molecular orbital formation. First we take surrounding group atomic orbitals and central atomic orbital. Now linear AB2 type surrounding atomic orbitals are two group orbitals because these are the two substituted atoms BB. Okay, B2. So we have two group orbitals. First is, just look at the left side of the slide. A is Jared. Second is जेरिड में क्या आ जाएंगे प्लस एंड प्लस, यानी कि जो मैंने डार्क सर्कल दिखाए हुए हैं फुल भरे हुए कंप्लीटली फिल्ड सर्कल्स आर शो द प्लस साइन ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड दिस ओनली वेकेंट सर्कल प्लेन सर्कल इज डिनोटेड एज अ नेगेटिव साइन. नाउ what are the two atomic or group orbitals? Plus plus and plus minus. When both the B combine, both the atomic orbitals of the B combine, plus plus signs, these are called Jared. And if one is filled and one is unfilled, plus and minus, then this is called B and B type ka. These are the two group orbitals, two combination of atomic group orbitals of the B. Okay, now we goes to the central. This is the group orbital. These are the group orbitals of the B2, plus plus and plus minus. Central have four type of atomic orbitals, S, Px, Py and Pz. Now after correlation Px, Py and Pz, S is combined with all the three plus plus plus. Now Py is, if we take the principal axis Py, okay, principal axis if we take Py, then what are the correlation after this? Py, one side is dark, one side is light circle, and Py is situated and in that position that plus lobe of P is overlap the plus lobe of S orbital. Right side of the slide, we see that the right side of the slide, the P orbital plus plus combination and minus minus combination. These are after correlation. We have two atomic orbitals, both the dark and light, and one central atom. Then central atom S and P. There are two bonds only, so we take S and Py only. First S combined with the plus plus and Py combined with the plus and minus. Select the orbital of central atom to correlate B. The orbital of same symmetry to group atomic orbital, so S and Py is in symmetry. We select from the four atomic orbital of central atom S, Px, Py, Pz. We select only two atomic orbital which coordinated with, which are in the symmetry of
group orbital of B. If they are in the symmetry, then they overlap. Otherwise, they are not overlap. So these are the only two combinations in the same symmetry. Now, next slide. These are the bonding molecular orbitals. Now, what about the anti-bonding molecular orbitals? If the linear combination, anti-bonding means both the dark orbital of B, yani plus orbital of B, and the minus orbital of A combined together and anti-bonding form. Then second anti-bonding is again that dark have light combination of P, plus and minus, and light and dark combination of P from another side, minus and plus. You see in the first line of this slide, S have plus and minus central atom, S have plus minus and minus plus central atom. When the signs are opposite of lobes and they overlap, then they form antibonding molecular orbital. सेंट्रल का साइन अलग है, साइड वालों का साइन अलग है. यदि ये सेम साइन होते हैं जैसा आपने लास्ट स्लाइड में देखा था तो वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अपोजिट साइन होते हैं तो वो हो जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दीज आर टू टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नाउ बेंट AB2, ये अभी तक अपन ने लीनियर का किया था. नाउ वी फाइंड द बेंट AB2. अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल बेंटेड. बी के क्या हो जाएंगे, दोनों डार्क प्लस हो जाएंगे, देन प्लस माइनस हो जाएंगे. इसी तरह सेंट्रल एटॉमिक ऑर्बिटल के अगेन SPX, PY एंड PZ. अब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे. दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड दीज आर द ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द B. अब इन दोनों के एनर्जी को यदि कोरिलेट किया जाता है तो 3 तो अपने को BMO मिलेंगे और 3 ABMO मिलेंगे. नाउ व्हाट, वाई 3? क्योंकि 2 और 4 कितने होते हैं, तो टोटल 6 थे. 6 से अपने के बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 होंगे. अब अपन सबसे पहले ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल वो वाला लेते हैं जिसमें दोनों प्लस हो. दिस बोथ आर प्लस. S ऑर्बिटल कंबाइंड. S कैसा होना चाहिए, एक बार डार्क होना चाहिए और एक बार लाइट होना चाहिए. एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना, तो प्लस इसको साथ जोड़ेंगे, प्लस. सेकेंड, यदि अपन PY जो अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था, PY लेकर के क्या करेंगे, PY लेकर के एक डार्क एक लाइट, ये डार्क की तरफ डार्क है, लाइट की तरफ लाइट है. अगेन दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये बेंट का है. नाउ PZ में क्या होगा कि PZ में डार्क वाला लोब नीचे होगा, लाइट वाला लोब ऊपर होगा. S दोनों डार्क है, यानी प्लस एक तरफ हो गए, माइनस वाला ऊपर चला गया. तो प्लस कॉम्बिनेशन ऑलवेज फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन ऑलवेज फॉर्म एंटी बॉन्डिंग. नाउ 3 एंटी बॉन्डिंग, 2 डार्क सर्कल S++ and light circle is minus. So this is anti bonding orbital. P orbital, towards dark circle the light lobe of P and towards light circle dark lobe of P, plus minus plus. And the third is dark circle and behind the light circle, again this is plus minus. So 3 BMO, 3 ABMO. These are the bonding molecular orbital of and anti-bonding molecular orbital of bent shape. Now we collect all the orbital, one side linear and one side bented, and draw the character table. This is the final character table given by the walsh. Left side we see the linear, right side we see the atomic orbital of the molecular orbital of the bent shape. Now left side, these are 2 sigma u, 2 sigma g, 2 pi u, 2 pi sigma u and 2 sigma g. 1 sigma u and 1 sigma g. These are given by the group theory and symmetry elements. This is final symmetry, point groups. I will tell you here because that is a very long tabular form and this is not in your course. We just remember the 1 sigma g, 1 sigma u, 1 pi u, 2 pi, 2 sigma g and 2 sigma u from lower to higher side. This is the notation actually, point groups of bonding, anti-bonding or non-bonding orbitals. Now here is bent shape, 1A1, 1B2, 2A1, 1B1, 3A1 and 2B2. These are the shapes. Now we write left side all the bonding, non-bonding and anti-bonding orbitals of the linear, and here is the bent shape. Energies, when the
molecular orbital, when the structure is slightly lower side, then the energy is low. Slightly higher side, left side, energy is high. If you see the 1 sigma g and 1 ag, 1 a1, the in 1 a1 have lower energy than the 1 sigma g. This is the character table. आप इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए. वैसे तो आपको बनाना आ गया, बट द एनर्जी कोरिलेशन इसको याद कर लीजिए, क्योंकि दिस एनर्जी इज अगेन एक्सप्लेन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द स्ट्रक्चर. ओवरलैपिंग से वो उसको निकालिए. दैट इज द अगेन very big part of the walsh diagram. So you have to know finally what are the energies. You have to correlate this type of energy. 1 sigma g have slightly higher energy than the 1a1 band shape. Linear का 1 sigma u है, उसकी कम है, 1b2 की ज़्यादा है. नॉन बॉन्डिंग में 1 pi u 2a1. इसी तरह से 1 pi u का दूसरा है 1b1. These two are non bonding. 2 sigma g, then this is, and lastly linear. इस तरह से correlation diagram of energy. You have to learn this. Now how we can calculate the shape of the, how we can find out the shape of the molecule, of the triatomic molecules. Take examples. In right side of the slide you see the examples. First is lithium hydride plus, Li2 plus. How many valence electrons? 2 valence electrons. These 2 electrons, lithium has how many electrons? 1s1, 2s1. Lithium has configuration 2s1. 2 electron of hydrogen. So 1 electron of lithium and 2 electron of hydrogen. And here is a plus charge. So we can minus 1 electron. So 2 electron goes to which type of energy molecular orbital? See the character table. These 2 electrons goes to 1 sigma g of linear and 1 a1 of bent. Means you can fill the 2 electrons the lowest energy level. Which is the lowest energy level? 1 sigma g and 1 a1. If we put the 2 electrons here, 1 sigma g is of linear shape and 1 a1 is of the bent shape. If 1 a1 is the lower energy, so it has bent structure. एक एग्जाम्पल और लेकर के देख लीजिए. LiH2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. इसमें कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा जी में जाएंगे. 1 सिग्मा जी में कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन. या 1a1 में जाएंगे. बोथ आर सेम, 1 लोएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल. तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नीचे भरेंगे अपन. उसके बाद अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन और है. वो इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके ऊपर वाली साइड में जाएगा, ऊपर वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल में. व्हाट इज़ द मॉलिकुलर अपर मॉलिकुलर सेकंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल? 1 सिग्मा यू और 1b2. इसमें जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो सेकंड वाले की लोअर एनर्जी किसकी है? बेंट की है कि लीनियर की? लीनियर की है. 1 सिग्मा यू की, तो लीनियर साइड पे रहेगा वो. इसलिए इसका शेप कैसा हो जाएगा? लीनियर साइड पे रहेगा. LiH2 में 3 इलेक्ट्रॉन हैं. दोनों के लीनियर में चले गए, एक ऊपर गया है, तो लीनियर साइड की कम एनर्जी है, तो शेप इज़ लीनियर. कैसा शेप हो जाएगा इसका? लीनियर हो जाएगा. इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है. इसमें इलेक्ट्रॉन भरने खाली आपको. फिल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर साइड टू द अपर साइड ओनली and see which orbital have, which molecular orbital have lower energy, which shape have lower energy. Okay, now LiH2 में भी अपन ने किया है. तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा जी में गए, चले गए, या 1a1 में जाएंगे बेंट में. 1 इलेक्ट्रॉन 1 सिग्मा यू में जाएगा या फिर 1b2 में जाएगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 1 सिग्मा यू में गया है, और 1b2 दोनों का है कोरिलेट किया हुआ, इसमें जाएगा. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है? लोअर एनर्जी किसकी है? लीनियर की. तो लीनियर शेप हो गया. यू कैन से दिस ऑर्बिटल होमो ऑल्सो. इसको क्या कहेंगे? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, HOMO. क्योंकि जितने भी मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इसमें ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल हाईएस्ट वाला कौन सा है? 1 सिग्मा यू. तो होमो के अनुसार आप उसको क्या शेप बताएंगे. ओके, अब अपन लेते हैं BeH2. इससे आपको समझ आ जाएगा. BeH2 एंड BH2 प्लस, दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं. 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए अपन 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही नीचे भरिए. 1 सिग्मा जी एन 1a1. फिर उससे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में जाइए, 1 सिग्मा यू और 1b2. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों में आ गए, 4 हो गए.
अब आप देखिए सेकंड वाले में लोअर एनर्जी किसकी, होमो कौन सा है, 1b2 है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, 1b2 या 1 सिग्मा यू। इनमें लोअर एनर्जी किसकी है, दोनों में से लीनियर साइड की है, 1 सिग्मा यू की है। सो द स्ट्रक्चर इज लीनियर। ओके, आई थिंक आपको काफ़ी समझ आ गया होगा किस तरह से कैरेक्टर टेबल बनाते हैं और किस तरह से इसकी ज्योमेट्री को या शेप को बताते हैं। नाउ इसके बाद अपन एक ले लेते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भी जाता है उसको होमो कहा जाता है। इसके बाद अपन लास्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं BH2। BH2 में बात देखिए, BH2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, 1 सिग्मा 0, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए ये दोबारा इस कैरेक्टर टेबल को देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 सिग्मा जी 1 ए 1, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1 सिग्मा यू और 1 बी 2। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, एक इलेक्ट्रॉन बचता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2a1 या 1 5 यू में जाएगा, दोनों में। इससे जस्ट ऊपर वाला कौन सा है, 2a1 या 1 5 यू। तो लोअर एनर्जी किसकी है, लीनियर की है कि बैंक, लोअर एनर्जी की a1 की है, तो इसमें चला जाएगा। तो शेप कौन सी हो जाएगी, बैंक। इस तरह से आप सबसे पहले क्या करना है, आपको कैरेक्टर टेबल तो बना दिए पहले, इससे आपको क्या करना है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं मॉलिक्यूल को, काउंट करने हैं, काउंट करके उनको नीचे से भरना है। नीचे से भरने के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू विच और molecular orbital, have to find that molecular orbital, that is called HOMO, HOMO. What is the HOMO of linear, 1 pi u, and what is the HOMO bank is 2a1. Which one have lower energy, 2a1 is of lower energy. So the structure is band shape. Energy of molecular orbital are according to the symmetry and overlapping of orbitals is, both of them are according to the symmetry. Okay, now last I will give you a question. Find the structure of water having 8 valence electrons. See the character table. Now if you have 8 electrons, 2 electron goes to lowest, 1 sigma g, then again 2 electron goes to the 1 sigma u, 2 electrons, then third pair of 2 electron goes to 1 pi u and 1 pi 1 2 3 4 and 5 6. This is the 6 electrons goes to. Now again next 2 electron goes to 1b1. Okay, 1b1, 1 have slightly higher energy, 1b1 have slightly higher energy, and 1 pi u have slightly higher energy, 1 have slightly lower energy. So what is the shape of water molecule having 8 electrons? This is the band shape. Okay, you have to find out the shape of any type of molecule. So the water molecule have which type of shape? Band shape.